Hi everyone, and welcome back to the official channel of LegalEdge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. Chalo. So let's start with another topic. And आज हम primarily second part discuss करेंगे हमारे landmark judgment series का of the year 2026. हम इसका first part already cover कर चुके हैं, wherein we had discussed about the relevant judgments given by the Supreme Court of India for the purposes of our paper. And part 2 के भी अंदर हम कुछ relevant judgments को discuss करेंगे जो Supreme Court ने 2026 में actually issue किए. ठीक है? So the judgments which we'll be discussing in our today's session includes right to work as a fundamental right, recognition of the work or the contribution of the homemakers, the judgment given with respect to compassionate appointments, the judgment with respect to the victims of human trafficking, and a judgment given with respect to right to free legal aid. These are other set of important judgments from this year only. ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट में कुछ जजमेंट्स ऑलरेडी कवर्ड थे, सेकेंड पार्ट में इन 5 जजमेंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक? So the first judgment which we have is the case of Shankar Mahto versus State of Bihar, which is related to the free legal aid timeline. Now, what is this free legal aid timeline? Now, you all must be aware about the fact that legal aid is considered as a DPSP, right? Under Article 39A of the Constitution of India, free legal aid to be given to the person is considered as a form of DPSP. And therefore, the state provides legal aid services to those individuals who are unable to afford a lawyer or a legal representation by themselves. जो खुद के लिए लॉयर हायर नहीं कर पा रहे हैं, जो खुद एक लीगल रिप्रेजेंटेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको स्टेट फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है. बट इस फ्री लीगल एड के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हो चुकी थी. दैट इज फ्री लीगल एड केसेस में टाइमली filing of the cases was becoming a problematic thing. देखो सिंपल सी बात है, if a person is able to afford a lawyer for himself, तो भाई लोअर कोर्ट से जजमेंट आने के बाद, ठीक है, लोअर कोर्ट से जजमेंट आने के बाद, if I am in a position to afford a lawyer, मैं तुरंत अपने लॉयर को बोलूंगा कि भाई अब आगे बढ़ो और अपील फाइल करो इन द हाई कोर्ट और इन द सुप्रीम कोर्ट as the case may be. Yes or no? And the lawyer will hear to me as well. बट फ्री लीगल एड के केसेस में होना क्या शुरू हुआ है, और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करना शुरू करी कि फ्री लीगल एड के केसेस में देयर वाज अ सब्सटैंशियल डिले इन फाइलिंग ऑफ द अपील्स. फ्री लीगल एड के केसेस में मतलब दोस केसेस वेयरइन द पर्सन वाज बीइंग रिप्रेजेंटेड थ्रू द लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, वहां पर अपील फाइल करने में ना बहुत केसेस में डिले होता जा रहा था, टाइमली अपील फाइल हो ही नहीं पा रही थी. एंड बिकॉज द पर्सन और द इंडिविजुअल इज एक्चुअली रिलाइंग अपॉन द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. बट भाई राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल तो उसके पास भी है ना. एंड फ्री लीगल एड के केसेस में अगर डिले अलग से होता जा रहा है बिकॉज मे बी ऑफ व्हाट शुड आई से अ काइंड ऑफ अ ignorant attitude of the legal services, among other reasons as well, because there was no timeline which was being provided by the state or by the courts कि कितने time period में appeal file हो जानी चाहिए, what procedure is going to be followed with respect to filing of the appeals. तो उनके कहीं ना कहीं right to free and fair trial के rights को वहां पर violation यहाँ पर suffer करना पड़ रहा है. And therefore, in the case of Shankar Mahto versus State of Bihar, the Supreme Court came up with a strict guideline, a set of timeline which is to be followed in cases of filing an appeal with respect to the legal aid cases, among other things as well. तो अब यहाँ पर शंकर महतो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाइंडिंग टाइमलाइन प्रोवाइड कर दी, एंड एवरी अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जस्टिस मशीनरी are now supposed to follow this timeline with respect to the legal aid cases. So the Supreme Court of India established a strict binding timeline framework to eliminate the delays in filing legal aid appeals and special leave petitions. So Justice Sanjay Karol and Justice N. Koteshwar Singh ruled that timely access to justice is a core constitutional obligation under Article 21 and Article 39A. कि टाइमली आपको जस्टिस प्रोवाइड करना है उस इंडिविजुअल को, भले ही वो लीगल एड सर्विसेज पे क्यों ना रिलाई कर रहा हो.
उसको टाइमली जस्टिस प्रोवाइड करना एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन as well as article 39A of the constitution as well. And therefore, to streamline the process, the Supreme Court mandated a nationwide standard operating procedure with the following rigid deadlines at each stage of the appeal life cycle. कि अपील के लाइफ साइकिल में वो जो टाइमलाइन अब फॉलो की जाएगी, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, एक बाइंडिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पर अब ले डाउन कर दिया है. So the Supreme Court issued the standard operating procedure which introduces a three-tier categorization of the cases. केसेस को 3 टीयर्स या 3 कैटेगरी में अब कैटेगराइज किया जाएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द अर्जेंसी फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रांसलेटर असाइनमेंट एंड ट्रांसलेशन ऑफ प्राइमरी और प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट्स. देखो ट्रांसलेशन करना पड़ता है बिकॉज लोअर कोर्ट्स में हो सकता है भाई हिंदी में काम चल रहा हो, या लोअर कोर्ट्स में हो सकता है रीजनल लैंग्वेज में काम चल रहा हो. अपील जब जाएगी, सो द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट आर जनरली कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ट्रांसलेशन करना भी जरूरी होता है. और ट्रांसलेशन कई बार लीगल एड के केसेस में महीनों तक चल रहा था, ट्रांसलेशन ही नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ द रीजन दैट परहैप्स द ट्रांसलेटर वाज आल्सो नॉट असाइन्ड फॉर द केस. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले क्या कहा, एक गाइडलाइन ले डाउन कर दी, एसओपी ले डाउन कर दी, wherein now the cases are divided into 3 categories based on the urgency for the purposes of translator assignment and translation of the priority documents. So category A cases यहाँ पर lay down किए गए हैं as death penalty, life imprisonment and sentences of 10 plus years. ठीक है, ये प्रायोरिटी केसेस होंगे, हाई प्रायोरिटी केसेस होंगे, जहां पर डेथ पेनल्टी इन्वॉल्व है, लाइफ इंप्रिजनमेंट इन्वॉल्व है या सेंटेंसेस ऑफ 10 प्लस ईयर्स इन्वॉल्व है. यहाँ पर 15 दिन के टाइमलाइन के अंदर, 15 दिन के अंदर ट्रांसलेटर असाइनमेंट और ट्रांसलेशन हो जाना चाहिए प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट्स का. कैटेगरी बी की अगर बात करें तो these involves those cases wherein medium term sentences and human right cases are involved. 10 साल से कम इम्प्रिजनमेंट के जो केसेस हैं या ह्यूमन राइट्स के जो केसेस हैं उनको कैटेगरी बी केसेस में रखा गया, जहां पर 20 डेज की टाइमलाइन दी गई है फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रांसलेटर असाइनमेंट एंड ट्रांसलेशन ऑफ द प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट्स. एंड कैटेगरी सी में ऑल अदर केसेस आर इन्वॉल्व, जहां पर 30 डेज का टाइमलाइन दिया गया. एंड ट्रांसलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. भाई रिकॉर्ड पे केस जब 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 केस पे लेकर जाओगे आप और आपको रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, सो द डॉक्यूमेंट्स आर सपोज्ड टू बी फाइल्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, बट अगर वो मान लो मराठी में है, गुजराती में है या हिंदी में है, तो कैसे अपील काम कर पाएगी. इसलिए ट्रांसलेटर वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग, तो उसको लेकर टाइमलाइन दी गई. एंड अदर इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस इन्वॉल्वड इज दैट द कम्युनिकेशन ऑफ द जजमेंट मस्ट टेक प्लेस विद इन 7 डेज. 7 दिन के अंदर जजमेंट कम्युनिकेट कर देना है आपको हर हालत में. जजमेंट कोर्ट से इशू होने के बाद जो पर्सन इन्वॉल्व है, जिसको आप लीगल एड दे रहे थे, उसको उसकी फैमिली को 7 दिन के अंदर आपको जजमेंट कम्युनिकेट करना होगा. देन यू हैव टू टेक कंसेंट फ्रॉम द कन्विक्ट्स विद इन 7 डेज. उसी 7 दिन के अंदर कम्युनिकेशन करने के साथ यू आर सपोज्ड टू टेक द कंसेंट ऑफ द कन्विक्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ फाइलिंग द अपील. डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट हो जाने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द केस विद इन 10 डेज. देन ट्रांसलेशन शुड बी डन विद इन 15 to 30 days डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी. कैटेगरी ए केस है, कैटेगरी बी केस है, कैटेगरी सी केस है. Depending upon the category of the case, the translation of the document must be done within 15 to 30 days, and then the filing of the appeal within 15 days of the receipt of the record. कि रिकॉर्ड जैसे ही आपके पास आ जाए, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास जैसे ही रिकॉर्ड्स आ जाएं, स्टेक होल्डर्स के पास रिकॉर्ड्स आ जाएं, अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन 15 days. And these guidelines or timelines are binding on all the stakeholders, including high courts, legal services authority, jail officials, and the translators. So वो जो untimely delay, unnecessary delay होता हुआ चल रहा था with respect to the filing of the appeal in legal aid cases, उसको streamline करने के लिए judgment Supreme Court ने यहाँ पर पास किया. That's the first important judgment of this part. That is the case of Shankar Mahto versus State of Bihar. ठीक है. Second important judgment को अगर हम देखें तो wherein right to walk is now recognized as part of fundamental rights of the Constitution. And the name of the case was Manir Ilaj Shikriyaz versus P. Ayyappan. This was a case of 2026. Now case शुरू कहां से हुआ, केस पहुंचा कहां तक. केस स्टार्ट होता है एक एक्सीडेंट से, wherein a very small child of the age of 5 years was actually walking to the school along with his father when they met with an accident with a tanker truck. And interestingly, जब वहां पर सारी चीजें क्लियर होना शुरू हुई तो there was no demarcated sidewalks or footpath present on that road. So there was a lack of basic pedestrian infrastructure as well. कि लोग चलेंगे कहाँ जब आप फुटपाथ ही नहीं दोगे, तो where the people will walk? The people will eventually walk on the road.
and that increases the risk for the safety of the pedestrian as well. So the tragedy basically started, that is, the litigation arose from a fatal road accident wherein a 5-year-old boy was struck and killed by a tanker truck while walking to the school with his father. The road completely lacked sidewalks, crossings, or basic pedestrian infrastructure. And then the matter eventually reaches the Supreme Court of India. And the Supreme Court expands Article 21 of the Constitution of India, which talks about right to life and personal liberty. इस आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दिया हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ is to be expanded to include the right to safe passage on roads and walk on an or to walk unobstructed by motorists. The right to life and right to liberty will also include a right to safe passage on the roads as well, wherein the pedestrian should have a right to walk without any obstruction being faced by the motorist. And therefore, certain directions were issued by the court. So, all the states and union territories were directed to submit the comprehensive municipal policies within 2 months to ensure the creation of unobstructed, disabled-friendly footpaths. कि सारे states और union territories को direction issue किया गया that they are supposed to submit their comprehensive municipal policy within the period of 2 months. 2 महीने के अंदर आप submit करो with respect to the construction of unobstructed and disabled friendly footpaths. एंड इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट पिटीशन में कन्वर्ट कर दिया था. केस ओरिजिनली मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से रिलेटेड था. उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली सुनते सुनते ही उस केस को एक रिट पिटीशन में कन्वर्ट कर दिया, जहां पर केस का नाम भी इवेंचुअली फिर चेंज हुआ. दैट इज रे फंडामेंटल राइट टू वॉक एंड फुटपाथ. ठीक है. सो इट वाज द केस ऑफ मनियर इलियाज शिक्रियाज वर्सेस पी अयप्पन, wherein the court recognized right to walk as a fundamental right under Article 21 of the Constitution. ठीक है. तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने इस साल रिलीज किया, दैट्स द केस ऑफ शिशुपाल एट शीश राम एंड अदर्स वर्सेस सुरजीत एंड अदर्स. शिशुपाल एट शीश राम एंड अदर्स versus Surjit and others. And this is the case wherein the Supreme Court observed that homemakers are actually nation builders as well. है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था, बहुत ही सिग्निफिकेंट जजमेंट था ऑफ दिस ईयर. क्या हुआ था इस केस में एग्जैक्टली? तो देखो, एन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस. एक एक्सीडेंट होता है और उसमें वाइफ की डेथ हो जाती है. ठीक है. एक एक्सीडेंट होता है हस्बैंड और वाइफ का, एंड वाइफ की उस एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है. ठीक. नाउ वाइफ वाज अ होम मेकर, दैट इज शी हैड नो अर्निंग. वो अर्न नहीं करती थी. शी वाज अ होम मेकर. And therefore, when a case or an appeal was filed with the Motor Vehicle Accident Tribunal, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल के पास जब कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम फाइल किया गया, so a compensation of meager 2 lakh rupees was awarded to the person. 2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन सिर्फ अवार्ड किया गया था. क्यों 2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन? इतना कम अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन इन द डेथ ऑफ द पर्सन क्यों अवार्ड किया? Because the claim was, the defendant's claim was that because the person was not an earning member, क्योंकि वो कोई अर्निंग मेंबर नहीं थे, इसलिए इतना अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन वहां पर सफिशिएंट होगा. Matter reaches High Court. The High Court agrees with the judgment given by the Motor Vehicle Accident Tribunal, and finally the matter reaches the Supreme Court of India, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को चेंज किया. So the Supreme Court of India stated that even if women can be considered as the homemaker, आप उनकी होम मेकर की कैपेसिटी में भी अगर उनको देखना चाहो, so there is a substantial unpaid economic labor performed by the women in such situation. भाई, विमेन होम मेकर का काम कर रही है. ठीक है. घर में वो सारी चीजों का ध्यान रख रही हैं, घर के खाने का ध्यान रख रही है, सारी चीजों का ध्यान रख रही है. उस चीज की आप इकोनॉमिक कॉस्ट निकालने के लिए अगर आप जाओगे तो यू विल रियलाइज दैट इज अ वेरी सब्सटैंटिव अनपेड इकोनॉमिक लेबर व्हिच द वुमेन आर एक्चुअली परफॉर्मिंग while they are only looking after the home. And therefore the court stated कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा. And Supreme Court ने एक नोशनल उनको एक मंथली इनकम अकॉर्ड करी. A notional monthly income, that is at least the work which is being done by the women as the homemaker of the house, ठीक है, can be equated to up to rupees 30,000 in a month.
And that's how the court stated that women or homemakers are a very significant part, okay, or their work performed, or the work which is performed by the women is a very important part on the economic GDP level of the country as well. So the Supreme Court of India in this case officially recognized homemakers as the nation builders and ruled that their unpaid economic domestic labor has a substantial and measurable economic value, and decided on 11th of June 2026 by a division bench of Justice Sanjay Karol and N.K. Singh. The judgment now established a uniform framework for calculating the compensation in motor accident claims involving the death of a homemaker. कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम की सिचुएशन में अगर होम मेकर की डेथ होती है तो कॉम्पनसेशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द डेथ ऑफ द होम मेकर, उसको लेके एक यूनिफाइड और यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क यहाँ पर कोर्ट ने ले डाउन कर. So the Supreme Court established a concrete benchmarks to ensure that invisible contribution of the homemaker to the family and national GDP is properly accounted for. ठीक है, कुछ बेंचमार्क्स ले डाउन कर दी और कोर्ट ने कहा कि भाई इनका जो कंट्रीब्यूशन है, भले ही दे आर नॉट अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, बट दे हैव अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फैमिली इनकम as well as national GDP of the country as well, and therefore their contribution should be properly accounted for. And thus the court came up with a notional income baseline. So the court fixed a minimum notional value of rupees 30,000 per month that amounts to 3,60,000 per year for a homemaker's services. कि विमेन एज अ होम मेकर या होम मेकर घर में जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको एक मिनिमम नोशनल इनकम वैल्यू आप दे सकते हो रुपीज 30,000 पर मंथ, which amounts to 3,60,000 in a year, and a distinct head of damages called loss of domestic care was introduced to calculate the compensation when no monetary income is shown for the deceased. कि अगर होम मेकर्स की बात करें जिनकी कोई मॉनेटरी इनपुट या मॉनेटरी इनकम नहीं होगी तो एक अलग से डिस्टिंक्ट हेड ऑफ डैमेजेस क्रिएट किया गया फॉर द पर्पसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉम्पनसेशन, और उस हेड को नाम दिया गया लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर. And why the judgment is significant? This is not a judgment which is recognizing the economic value or the economic contribution made by the homemakers in our country. But at the same point of time, this judgment is significant because of the fact कि भाई वो एक्सीडेंट जहां पर एक नॉन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली की डेथ होती है, होम मेकर्स की डेथ होती है, वहां पे भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन फैमिलीज को मिल पाए. ठीक है. So homemakers as nation builders was actually recognized in the case of Shishupal at Shishram and others versus Surjit and others. ठीक है, यहां तक क्लियर है गाइस? चलिए, so let's move to the next case, and the next case which you have is Kulsum Nisha versus state of Uttar Pradesh, Bihar, sorry, versus the state of Uttar Pradesh, and wherein the primary issue was related to compassionate appointment. Now, compassionate appointment is actually an appointment given by the state to a family member of the deceased. भाई ये सब चीजें आप लोगों ने शायद सुनी होगी that whenever a family member or whenever a person of the family who is actually working under the government, who was having a government job, when they die during the service, one of the family member of the deceased will get the job. ठीक है, कि जो डिजीज के फैमिली मेंबर का कोई एक इंडिविजुअल है उसे वहां पर वो जॉब ग्रांट कर दी जाती है. इसी को हम कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कहते हैं. बट कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इज गिवन टू द फैमिली मेंबर, बट the general notion of the people is that once a daughter gets married, so she moves to another family, and therefore the primary question in this case was that whether a married daughter will have a right to get the compassionate appointment in case of death of the family member or not. That is her original family, her natal family. ठीक है, that is her natal family. नेटल फैमिली मेंबर की अगर डेथ हो जाती है तो क्या मैरिड डॉटर एंटाइटल्ड होगी टू गेट द कंपैशनेट अपॉइंटमेंट?
That was the primary issue in the case of Kulsum Nisha versus State of Uttar Pradesh. So let's see what the case was exactly and what is the judgment given by the court. Now, the case arose when the appellant's mother, Srimati Badrun Nisha, a fair price shop PDS dealer in district Amethi, Uttar Pradesh, passed away. The appellant was Kulsum Nisha in this case. Her mother, Srimati Badrun Nisha, was running a PDS shop in district Amethi, Uttar Pradesh, and she passed away. Kulsum Nisha subsequently applied to be allotted the dealership license under the dependent quota, that is compassionate appointment. Badrun Nisha की डेथ के बाद कुलसुम निशा ने एप्लीकेशन फाइल करी टू द गवर्नमेंट टू गेट द डीलरशिप लाइसेंस under the dependent quota, that is under the quota of compassionate appointment. Now, despite continuing to live in the same village, actively helping her mother to run the shop, and being the sole earner responsible for her sisters, including a visually impaired sister, local authority rejected her application. वो उसी गांव में रहती थी जहां पे मदर रहती थी, वो मदर को हेल्प भी करती थी इन रनिंग द शॉप. She was the sole earner in the family, now responsible for taking care of her visually impaired sister as well. But still the local authorities rejected her application. अब local authorities ने उनकी application को reject क्यों किया? So her application was denied based on the Uttar Pradesh Essential Commodities Control Order 2016 and a 2019 government order which excluded married daughter from the definition of deceased dealer's family. ठीक है, लोकल अथॉरिटीज की उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का कारण था 2016 का एसेंशियल कमोडिटीज कंट्रोल ऑर्डर एंड 2019 का एक गवर्नमेंट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू विच married daughter were excluded from the family members of the deceased dealer family relations. And the Allahabad High Court actually initially upheld the rejection, and Kulsum Nisha then appealed to the Supreme Court of India. लोकल अथॉरिटीज ने रिजेक्ट किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया कि डॉटर की डेफिनेशन में मैरिड डॉटर नहीं आएंगी. And therefore, finally, Kulsum Nisha filed an appeal in the Supreme Court of India. Now, the Supreme Court of India in this case gave a very important judgment. Supreme Court stated that married daughter are entitled to compassionate appointment. Married daughters are entitled to get compassionate appointment. This was the final judgment which was given by the court. अब क्यों अलाउ किया गया? तो देखो, the first thing first which the court did was to dismantle the gender stereotypes. The court observed that states' regulation assumed that a daughter completely severs all ties with her natal family upon the marriage, and the bench termed this a gender-based stereotype that is incompatible with the constitutional equality. ठीक है, कोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नमेंट के रेगुलेशंस का मानना ये है कि मैरिड डॉटर जो होती है वो अपनी नेटल फैमिली के साथ सारी टाइज खत्म कर देती है जब उसकी शादी हो जाती है. ठीक है, क्योंकि शादी हो जाएगी, आप किसी और घर चले जाओगे, अब आप उस फैमिली के मेंबर हो, तो यू हैव सीवर्ड ऑफ ऑल द टाइज विद द प्रीनेटल फैमिली. बट द कोर्ट स्टेटेड दिस इज अ जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप व्हिच कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ वैलिड थिंग विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. भाई अगर ऐसा ही होता तो आप मैरिड डॉटर को प्रॉपर्टी में भी राइट क्यों दे रहे हो? Married daughter is also given a right in the property of the family, of the natal family, right? तो भाई ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग किस तरीके से आप कर सकते हो कि भाई क्योंकि आप चले गए हो तो आप डॉटर की डेफिनेशन में नहीं आओगे. Then the court about the concept of dependency. The court stated that dependency is a question of fact. So the bench ruled that dependency cannot be predetermined by marital status. Many married daughters continue to live with and care for or depend upon their parents. कोर्ट ने कहा डिपेंडेंसी मैरिटल स्टेटस पे नहीं डिपेंड करेगी, ठीक है, इसके बेसिस पे नहीं डिसाइड की जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपका मानना क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशन का मानना क्या था, दैट वंस द डॉटर हैड मैरिड टू अनदर फैमिली, अब वो इस फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. कोर्ट ने कहा ये गलत है. डिपेंडेंसी इज नॉट प्री डिटरमाइंड बाय द मैरिटल स्टेटस ऑफ द वुमेन, ऑफ द डॉटर. क्योंकि कोर्ट ने कहा कि कई बार मैरिड डॉटर भाई अपने पुरानी फैमिली का या नेटल फैमिली का ध्यान रखती है, उन्हीं के साथ रहती है, उन पर डिपेंड करती है.
and therefore court decided to give a purposive construction to the regulation of the government. And applying the purposive construction doctrine, the court held that the word daughter in the clause 2, subclause P of the 2016 control order must include a married daughter, and therefore she is eligible provided she furnishes a dependency certificate, meets the local residency requirement, and provides a no objection certificate from other family members. कि भाई रूल्स के हिसाब से डॉटर की डेफिनेशन में मैरिड डॉटर को भी इंक्लूड किया जाएगा, and she is eligible to get the license or the dealership of PDS shop provided she furnishes a dependency document, dependency certificate, fulfills the local residency requirement. Local residency requirement का मतलब क्या है? PDS shop की dealership obtain करने के लिए it is important कि आप similar जगह पे same जगह पे रहते हो, and provides a no objection certificate from other family members. Compassionate appointment के लिए ये चीज जरूरी होती है कि आप डिजीज के बाकी फैमिली मेंबर से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको ऑब्टेन करना पड़ता है कि फैमिली में और किसी को प्रॉब्लम नहीं है अगर जॉब या डीलरशिप आपको दे दी जाती है तो. And therefore, the case of Kulsum Nisha versus State of UP is a relevant case or a relevant judgment, wherein the Supreme Court made it clear that even married daughters are entitled to get compassionate appointment from the government. Okay? Because their marital status is not a conclusive proof that they have severed off all the ties with their natal family. Okay? Chaliye. So let's look at the last case of the day of this part. That's the case of Prajwala versus Union of India and others, wherein the Supreme Court gave a detailed set of guidelines for the protection and rehabilitation of victims of human trafficking. अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ऑफेंस हमारी कंट्री में डील किया जाता है विथ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट. ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज मेड पनिशेबल ऑफेंस अंडर द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट. बट ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए ट्रैफिकिंग के इस लॉ को प्राइमरली वहां पर इन्वोक करती है गवर्नमेंट मैक्सिमम केसेस में जहां पर कुछ ना कुछ प्रोस्टिट्यूशन रिलेटेड एक्टिविटी चल रही है. But not every woman who is engaged in the act of prostitution is there with their own consent. Right? At times, the victims of human trafficking are also engaged in the activities of prostitution by their traffickers. But law क्या कर रहा था? Immoral Traffic Prevention Act जो consensual sex workers हैं उनको और जो victim of human trafficking है दोनों को बराबर तरीके से ट्रीट करता था. And then there were multiple other issues as well with respect to the application of this law. And therefore, in the year 2004, the anti-trafficking NGO Prajwala filed a public interest litigation in 2004, highlighting the systemic deficits, poor shelter home conditions, and lack of cross-state rehabilitation coordination. क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती थी? रेड करती थी किसी भी प्रोस्टिट्यूशन मतलब जिस भी जगह पे चल रहा होगा. ठीक है, ब्रॉथल मान लो, ब्रॉथल पे रेड करेगी, सारी वुमेन को ले आएगी और एक साथ एक जगह पे बंद कर देगी. बट वो बड़ी शेल्टर होम्स की जो कंडीशन थी ना, दैट वाज वेरी पुअर, एंड यू आर ट्रीटिंग द कंसेंशुअल सेक्स वर्कर्स इन पैरिटी विद द विक्टिम्स ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज वेल. तो 2004 में इन सारी चीजों के इशू को लेकर प्रज्वला जो कि एक एनजीओ है उसने पिटीशन फाइल करा सुप्रीम कोर्ट में. बट 2015 में ये मैटर डेफर कर दिया गया. The Supreme Court initially disposed of the petition in 2015 after the Union government promised a standalone anti-trafficking law and an organized crime investigation agency. Human trafficking के मैटर्स को डील करने के लिए 2015 में यूनियन गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया सुप्रीम कोर्ट को that they will create or they will enact a standalone anti-trafficking law. Anti-trafficking law के लिए वो एक अलग से लॉ बनाएंगे एंटी ट्रैफिकिंग के मैटर्स को डील करने के लिए. And an organized crime investigation agency will be created for the purposes of dealing with these issues only. Now, by relying on the promise given by the government, the Supreme Court decided to dispose of the petition in the year 2015. But जब फिर पिछले 10 सालों में भी कुछ नहीं हुआ, तो 2026 में आकर ये केस एक्चुअली रिजरेक्ट करता है, दोबारा सामने आता है. And due to a decade-long legislative delay, Prajwala moved a miscellaneous application forcing the court to intervene and bridge the legislative vacuum under Article 142 of the Constitution. Article 142 को यूटिलाइज करके फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस को इशू करा. पहली चीज जो कोर्ट ने कहा कि रिहैबिलिटेशन एज अ फंडामेंटल राइट. कोर्ट ने कहा कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रेड कंडक्ट करने पे खत्म नहीं हो जाती. ठीक है, कोर्ट ने कहा कि भाई स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी
सिर्फ रेड कंडक्ट करने पर खत्म नहीं हो जाती. यू हैव रेडेड अ brothel, your responsibility is over under the Immoral Traffic Prevention Act. The court stated that this is not a correct approach. Rehabilitation of the victims of the human trafficking is a fundamental right, and therefore the state is obliged to rehabilitate the victims as well. ठीक है. दूसरी चीज कोर्ट ने कहा दैट प्राइमेसी ऑफ विक्टिम ऑटोनॉमी एंड कंसेंट. आप जबरदस्ती किसी पर्सन को शेल्टर होम में नहीं रख सकते. आप जबरदस्ती किसी पर्सन को डिटेन करके नहीं रख सकते ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे वर व्हाट शुड आई से दे वर फाउंड इन अ brothel. You have to look at the consent of the person as well. You have to respect the victim autonomy as well. ठीक है. आपको उसकी मर्जी के बेसिस पर आगे के डिसीजंस लेने होंगे. And the third was about separation of victims of human trafficking from voluntary or consensual sex workers. आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स और वॉलंटरी सेक्स वर्कर्स दोनों को एक तरीके से डील नहीं कर सकते. दोनों को आपको सेपरेटली डील करना होगा, डिफरेंटली डील करना होगा, क्योंकि दोनों की सिचुएशन सिमिलर नहीं है. दे आर नॉट अलाइक, they are differently placed, and therefore they can be or they should be treated differently. And then certain guidelines or nationwide victim protection plan was laid down. तो सबसे पहली चीज कोर्ट ने कहा that there must be a mandatory threshold inquiry. So when an adult is produced under section 17 of the Immoral Traffic Prevention Act, the magistrate must immediately conduct an inquiry to determine if they are choosing voluntary sex work or want protective custody. कि अगर वो विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है तो दे वुड डिमांड प्रोटेक्टिव कस्टडी, या फिर मजिस्ट्रेट को वहां पर ये भी इंक्वायरी कंडक्ट करनी होगी टू डिटरमाइन कि भाई क्या ये वॉलंटरी सेक्स वर्कर्स तो नहीं है. देन सेकंड वुड बी रिटन जस्टिफिकेशन. If a magistrate can only bypass an adult's express choice in rare cases of severe safety risk or coercion, which must be justified in writing. मैजिस्ट्रेट क्या एक्शन लेना चाहते हैं वो उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा इन राइटिंग. जैसे मान लो एक पर्सन बोलता है कि भाई मुझे प्रोटेक्टिव कस्टडी चाहिए, बट उनकी सेफ्टी के लिए या पर्सन बोलता है मुझे प्रोटेक्टिव कस्टडी नहीं चाहिए, बट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्स दैट द पर्सन शुड बी सेंट टू प्रोटेक्टिव कस्टडी. वो जस्टिफाइबल रीजन उनको राइटिंग में देना होगा. And then structural accountability was also decided by the court in this case. So the court stated that every state must designate an additional Director General of Police, ADG. Higher rank होती है पुलिस महकमे में, ठीक है. An ADG must be designated as nodal officer to oversee the counter trafficking operation, ताकि एक सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी भी आ पाए with respect to the rehabilitation of victims of human trafficking as well. So this was the case of Prajwala versus Union of India. ठीक है. तो लैंडमार्क केसेस की अगर हम 2026 के रिस्पेक्ट में बात करें, जितने जजमेंट्स अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आए, these are the important ones. अगर आप इनको इतना कवर करके रख लोगे, just remember the name of the case, the articles which are involved over there, and what was the judgment given by the court in the respective case. That would be sufficient for the purposes of your paper. And obviously अगर आगे भी कुछ जजमेंट्स आते हैं या पिछले 6 महीने की लिस्ट में और लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, so we'll come along with that also. And इसके अलावा अगर और किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो, so you can let us know in the comment section. बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक द सेशन एज वेल, एंड तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, एंड विल मीट सून गाइस. राइट, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच.